Hallelujah. Hallelujah. You may be seated, please. अपने कान सब भइबो परिबो We thank God for this blessed convention God has given us this year. Jitieri ukapajaba thajjakapa krodika utio khabio ko kachala ke thajebia ukapajaba chia. इटो सालते होले भी स्वामी खान की तो आशीष थका लगा कन्वेंशन दिया करने ईश्वर के धन्यवाद Truly, the Lord is moving mightily in all, has been moving mightily, even this morning especially. God has been moving mightily through the Holy Spirit. Ukathotori ukapajaba ko tipatte ko no kama sorpo ko seri matsa katsamo bahuri chdo kise ko ti honore ukapajaba ropo ginno ko seri matsawe. ईश्वर हमें खान लगा मीटिंग्स कांसो ते एकदम भक्ति प्रकाम करेगी ना हिस्से थाके लिए भी आज फुजोटे ईश्वर ताई लगा आत्मा हमें खान माजोटे पताई देगी ना एकदम जोर भक्ति लगा काम करे दी से And the reason I have seen, similarly I have seen the Holy Spirit moving in all the meetings I've attended in the West, in the down under, that is in Australia and the South Pacific area. In all these places, the Holy Spirit was moving mightily all over Europe, America, all over, mightily, so mightily as never before. Shiro ukapajaba kama sarpo we ko seri vodi kakrami ki zadiri vo Europe zadi zo shiri Australia zadi shiri America nore thatsa serna ke kachapa tedo ko seri matsa gaba susa chaba. इधर जगह एकला टिनो होए किंतु अमी बिरा लगा जगह खान सब थे ईश्वर एकदम आत्मा ताई लगा आत्मा जोर प्रगिराई दी कि ना भक्ति प्र काम कराते दिखी पाया सी वेस्ट फिनी होली भी और नीचे फिनी ऑस्ट्रेलिया टी पैसिफिक ओशन इटु खान फिनी इधर एकला न हो यूएसए यूरोप इटु खान सब टी ईश्वर लगा भक्ति आत्मा एकदम जोर प्र काम करिया हाँ तो दिखी पाई कि ना हिया सी. So now I'm addressing the church, so all of you mostly are baptized in the Holy Spirit. So all that we can understand from this is that the Holy Spirit knows there's very, very little time left. He is working with in all his power and might to prepare his a group of people for the rapture. Mo rapak ke ho ze susa ratchakata mori karchakata sabakatala mo asu ginuno hapo sigaja susaliro kama sarpo we chetiuno ko sedim hatsakata susa sabadebo sa puchawliro kapanja ka forwe penyo tharbakata susa थागत सुस चबादे इटे तो अपनी खान सब बेशी भक्त होले आत्मा प्र बपतिस्मा पाई लो लगा मानो खाने ऐसे ही तो करने हमें अपनी खान की कबूले मान ठकाते होले इन्हीं का आत्मा एकदम भक्ति प्र काम करा तो हमें खान के दिखाई ऐसे कोई ले ईश्वर पवित्र आत्मा तो अलग दिन है बाकी ऐसे कोई के न जाने तो करने ईश्वर तो चाहे लगा मानो खान के टाइ आहा लगा दिन करने एकदम जोर प्र तैयारी कुरिया लगा काम तो चलिए ऐसे ही. Simple as this, as you hear the word of God, receive it as you heard on the first night. Receive it. Here we have a hearing ear. Receive it into your heart and then surrender yourself. Then the Holy Spirit will start working as you speak in tongues. He will make you ready as you heard on the second day. Very simple and straightforward instructions on the second night convention, on the convention meeting. Ogo krodike ho ke ze Zakaria thozaja oga bunba masamtsdi Rama Crosody, Ugo Kipugaza, Ugobo, Pudio Renale, Nika Dibia, Pudio Renale, Sosa, Pelladi, Lilegaletele, Musichilia Liro, Camasor Poe, and Gitugaleteledo, Mukamasor Poe, Dodzabia, Ropocal was a there, but Dodzugaleteledo, Bo Zakanya Nuri Ugo Shikale Come, Pudio no Talimorgasho, so suppose there. It is so like a convention like a din can so American is so got a hunigina halaga his upte is so American ki hunibo para laga can DC it took on Bramican is so like a kotaki kuidian say to can so huni lobo American lagamon bito did hali lobo it American
laga jivan te ami khan chulai lobo etu ke ami khan swikar koribo aru ami khan etu biswas korige etu hisab te jivan chulai se kule iso laga pavitra atma abhishek ta ami khan upoti nami ahibo aru kitya jai laga abhishek ta ami khan upoti ahibo titya etu abhishek prahe ami khan ke iso aha laga din kani tayari koribo etu to hoile etu convention laga dusra din laga prachar ti safa safi apni khan ke koi dise. Therefore, this year, more than it's quite exceptionally, this year, more than all the previous years, as many who desire to receive the Holy Spirit, adults and children alike, all who prayed, they received the Holy Spirit. In all the meetings, both in the West and in the South Pacific area also. bo Jim Hodza vokata tiki ko sheri chetiu nuha vodi kitza west side zo sheri voka krami kitza zo sheri vopa cross side zo sheri ropu we ka hubri ta totsidi ropu chaga zamie so ropu ngukele so cheleba पहिला दिन खान प्रवि आजिकाली दिन तो होले कौन तो जगह ती होले भी वेस्ट ती हबी साउथ वेस्ट ती हबी इफिने होले भी डांगर छोटो किमान जन इसो लगा आत्मा पाइलो बोले मन इच्छा करी था क्या से ताई का सब भी इसो लगा आत्मा तो पाइलो ही था क्या से. So it all begins with the word of God, how you listen, and then accept it, receive it in your heart, understand, and then respond by surrendering. So let's praise God for all what God has been doing in all places, even here. During the last few days, especially this morning, I could experience a mighty move of the Holy Spirit. Shall we praise God? Muslau ko kabin ba diano shi gele be renale ni ke dibi renasale so sin melugi sele pelele musubi ni bi chekele chele ro ropo le ka so sabamo phatho so ha tatsak kri go nui sabamo ba hori hanui chmo chedo hari phatho so se cheka cha ugo donu cheka sala o ka bin ba cheka cha chada kha एडो गान सब टाइम गान करी लोबो फारे बोले बेश आसानी ऐसे एडो को तिब्रा सूर्य करी ऐसे बोले हुनी पाइलो अपचुटी आमी गान एटो के ग्रहण करी लोबो आमी गान लगा मन ते राखी लोबो एटो के आमी गान विश्वास करी गान आमी गान लगा जीवन ती चलाई दिसे कोले एटो गान लगा काम सब तो चलिबो एटो एकला तो येते हे न होय किंतु सब जगह फिनी और सब मीटिंग ती थाकिले बे आज फजो लगा हो माइटी ईश्वर आमी गान मजोटी पवित्र आत्मा लगा डांगर काम करी दिया कान सब कनी धन्यवाद मन पर ईश्वर के धन्यवाद दिबो. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. 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 Don't just keep quiet. You thanking, when you say thank God for what God has done, you can say thank you, Jesus. Thank you, Lord. I praise you, Jesus. You can say anything. Don't keep quiet. Nyoko zi di bata hije deri niga to ke hubur pulibi jobat hije lebin pejile ikatsa ke hubur pudi uka bunjama chekle susa chelije ईश्वर के धन्यवाद दिया हम इते अपनी की होले भी कबो पारे ईश्वर के धन्यवाद दिया ईश्वर के थैंक्स दिया ईश्वर के महिमा दिया ये सब तो करिबो पारे किंतु अपनी चुप तो ना था कि When you give thanks a little bit, you'll get more. no ma ke dinyo bala nyepo thije saliro po khapakra bien chdio अपनी की बोलो पाइलो करने ईश्वर के धन्यवाद दिला को बेशी पाबो And vice versa. If you don't give thanks, you won't get anything after this. mo sukapetsu not ke thije khasale modaliro no sem ha pringule modadio इतो लगा ठीक उल्टा भी काम चलिबो जदि अपनी को ना धन्यवाद न दिले को ना For all the पाबो good things God does for us, we must give thanks. Once again, let's thank God. uka bunjama diano pu ka ko uka bunjama thije mo sho shiba sala kori pabo sa uka bunjama chero kha ईश्वर ब्राह्मी का लगा जीवन ते करे दियो खान सब कनी जाके थैंक्स दिबे को यहाँ से करने को एक बार धन्यवाद दिबो Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for all your blessings. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We thank you. We bless your name. We praise your name. Hallelujah. For the word of God is going to give us. In advance, let us thank the Lord. uka bunjama diano pu ka bhapa te nuri po thije le no ba ईश्वर ता लगा को था अमेरिकन के नाद्या अगोटे अमेरिकन सब ईश्वर के धन्यवाद दिबो Hallelujah. Praise the Lord. Thank Praise you the for your Lord. Praise precious the Lord. word you have prepared for us. Thank you, Lord. Now let us turn our Bibles without any delay. It's already almost 12 o'clock. So we'll try to finish the meeting quickly. So you must also listen carefully because I'm going to try to finish the meeting quickly. uko barode sala uko casino susa
kahu kawa susa chudo mo nyukore pate kaze kathola susa lale gele chale 12 बजे जहाँ से मैं पारा तक मीटिंग तो जल्दी से इस करी दिबो जल्दी सर कथा कोई दिबो इटू करने अपने गन भी मरम करी गना सब होशियार ब्रहुनी भी All right. First of all, please read Acts of the Apostles, chapter 7, verses 2 and 3, and after that, I'll be reading the rest of the verses. 마가츠고 텐예 게니무세 테리토 우고 투서 프레시 스시노노 아 게크리고 플라보스도 Acts chapter 7 verses 2 और 3 पुरिबो इटू पीछे ती मैं बाकी खान पुरी लोबो And he said, Men and brethren and fathers, hearken, the God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran, and said unto him, Get thee out of thy country and from thy kindred, and come into the land which I shall show thee. Si te pue she a kiziko mu apunyoko reneleche upu Abraham ne vo haram nu luke monu Mesopotamia renanu kituki zapuza ye Jehovah po pengu adishe po ki non kize mun se yeme perhe pralie di to se a kize po tasen ke getonu voleche sita. All right. First of all, from what we just read, we heard that that the God of glory appeared to Abraham when he was in Mesopotamia. 우고 테리토 프레겔레 수사 우고 부 아브라함웨 부 보디 하란 메소포타미아 그저 나누바 그저기 자푸자에 저그 페뇨베 버 부pengusa सबसे पहले हामी खान पुरी बोले परात अब्राहम तकिते मेसोपोटामिया ती थागी शे तते महिमा लगाई सो ते ताई निजोर की अब्राहम की दिखाई दी से After this, we will turn to Genesis chapter 12. Here, at the end of chapter 11, it says it was called Ur of the Chaldees, or Ur in Babylon. 지로고 게르키 덕케 게뉴니보도 데리 게르케뉴 프라가타 모자 게르포 텔라누 프라가츠게미 수사 보디 우르가자 베빌론 까바 르나 이즈보 시즈보리 프라바 इधर पीछे दे हामी खान जेनेसिस चैप्टर 12 चाहिले डेटे दिखिया से इधर कैलडिस ती थाके लगा और कोया से न होले भी बेबीलोन ती थाके लगा Now, the similar words are mentioned here, chapter 12, verse 1. Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show you. 시케 게뉴 포너 거 프라겔게미 아브라함 부부 부기즈모 부세예고 슈로 포키 카와디 कपनिबथो खासके तो थत्स कि जुन बोले नो गच पुसा चैप्टर 12 लगा वर्स 1 ते हामी खान पुरी बो परिया से सोट अब्राहम के कोया से अपने निजो लगा देश प्रौलाई लबी अपने लगा परिवार मानो अपने बाबा लगा गौर पर और हामी अपने के दिखाई दिया लगा देश ती जाबी All right. Now, first of all, Abraham dwelt in a place which was very advanced for that period of time. 테리토 아브라함와 보 थत्स मोइ नदी 제 보 로가바 띠우노에 थत्स सुसा विसे मोरि विके हिया सेगच थत्स बनु रन्ना बनु लोगचा सबसे पहला अब्राहम तो होले पहिला चाइ ओटो होमय लगा दिन थे एकदम पारी लो लगा उठी जा लगा जगह एक तारी थाकिसी He was rich in cattle and herds and all things. He had abundance of all things. को मोरि मा हुबनु जशरी मा के छोकेल हो सकबा सिकचक लु बनु लो ओटो जगह तो होले पालिया लगा जानवर हो बी बेरा का नबी की ते होले बी बिसे धुनी थाका जगह थाकिसी So this in addition to that place being advanced. So but what attracted Abraham to leave all that for what? To go to a place which he has not heard of or seen. God says, I will show that land to you later. ससिकच के होगबा रन्ना बनु लोबादि पो पपु उकबन पुगच रन्ना पो सिगमो nguगमो रन्ना सुनु भगदो किजब पुनु हसदि पपु सुनु भगच सु छदागा इडो निस्ना थाई सो पारी लुआ सो फिने डांगर उठी लुआ लगा जगह एक तारी थाकिसी किंतु की ब्रही ताई के इटो कान सब छारी बोदी से सो ताई के कोया से हमें अपनी की किते भी न जाने लगा जगह एक तारी अपनी के पठाई दिबो It is mentioned in chapter 7 verse 2 in Acts. The God of glory appeared to Abraham. 솔리로 마그츠고 겐니에 마그츠고 텐니에 겐니노 투비가바 우고물리비 솔리로 제호바 자푸제 제호바 튀어
po pengusa ka cha po sungu ke lela Itu tu kami kan Acts chapter 7 verse 2 ti dikhi po paria se Isor mahima lagai so to tai nijor ke tai ki dikhai di se. Mainly when we speak about the glory of God, we speak about God's character. We just don't speak of God's character as character. It is so great, we call it glory. mo uko zapu zaye idi uka penjapa zapu zaye idi puda lero pu jorli susa pu jorli ke vi su puba mo pu jorli ke vi susa pu dolero pu chi choli kan jaga chbo sabasla zapu zaye idi pu ka chaya Yede mahima laga Isor ine ka koi thaga laga matlab to hoile Isor laga subhav ke mahima ine ka koi ase Isor laga subhav poti kotha koile beshi dangor ase itu garne ami kan khatta pra itu ke mahima itu koi ase. There's nothing like it on this earth, and nothing can compare to that glory of the Lord. mo ki junum ha purise pu sosa ke majali anja mo uka penjapa zapu zaya ha purise di ke majake le bomo पृथ्वीले itu nisnai kubi nai aru Isor laga mahima satte nap koribo para laga ekhu nai. Like Brother Martin testified, his father saw in a vision Jesus standing, the cross of Jesus, and the blood there that touched him. That's the glory of the Lord, love of God. mo uko brother Martin pu pu kal hu zapuno pu ka chake me pu we Jesus Christa cruz mo cruz kideno teje kru ga cha so ngu ga cha pu ka chake me su uka penjapa zapu zaye pu ke khre ka za zaye su sa tha ka cha su sa pu ba Ami kan laga brother Martin pratai laga sakiti koi diani shina tai laga baba pra darshan dikyate Jisu laga cruz aru tate khun gire thaka to dikishi itu kya ase gole so laga mahima Isor laga morom to dikhai dia ase. He didn't know the living God and he wasn't worshiping the living God. He left all that just because he caught sight of the glory of the God of glory. pu higa do ke penjapa simo mo deri uka penjapa higa ba po zaye pu zapu zaye su ngu ka cha gideno po mhapate khawade po suko khade po kijike kri bonu bo ka cha su cha Tai jinda thaka laga Isor ke jani thakya nai kintu tai kite itu darshan Isor laga mahima to dikhi paise titia tai jinda Isor ke jani pailu gena tai ke man korise dusra sob to chharibo parise. Similarly, I would like to share with you that glory that is seen in Christ Jesus, who died on the cross for our sins. so samye to di Jesus Christa uko cross no shekata po zapu zaye pu ki ba asu se ka za sana ba Iti हामी अपनी खान की तो एक ही महिमा जुन्टु यीशु ख्रिस्ट तै लगा क्रूस थे मोरिया हमई ते हामी खान की दिखाई देशी तो कबूल माना से. Today, the word of God, as we heard from this last few days of the convention, for those who have come here for the first time, uko po ri kroti ke ho ke zati ho no uko ma ka kran ka cha chile da deri po ri vor je do hanu kariya thotsri vor ka ba mi gola Itu convention लगा पहिला दिन पर हामी खान इसो लगा कोठा बेश हुने गिना आही आसे किंदे थाकिले भी आज फुजोर हे पहिला बार आही गिना थाकिया मानु खान करने. Jesus took our sins. You heard last night, Jesus took our sins in our place. He died for us sinners. He is the one who should judge us. Instead, the judge, he took our place in order to set us free, that we may not have to taste death in the lake of fire. mo po uko we ka phuma mi mo ko we shaja su sa muk za ka cha su sa cha deri Jesus Christa putyo uko su chri po uko chapiu chmona po uko su chri bogo ka phuma gala po shesa mo su ginu uko po podi mi jinu no ko ka la le go la po su sa cha sa थाकिले भी जो आखले हामी खान हुने लो लगा हिसाब थे हामी खान सबै पप्पी मनु खान थाकिया से किंतु हामी खान लगा सजाई तो ईश्वर राय निजर ही लुई लुईसी ईश्वर ही विचार करो वाला से किंतु तय हामी खान के विचार करो लगा बदली तय हामी खान लगा विचार लुई लुईसी तय हामी खान लगा पाप तो बिखि लुई ना हामी खान ने मुरीसी की करने ऐसे गुला हामी खान के नरक जुई पर बचाई दिबो करने. Because he was perfect, sinless, God accepted him as that perfect sacrifice to die on behalf of mankind. ke kilam na po vi lo chok chala mo po vi lo chok chala po themie la po kal hu khasdi theme kala le ga dio ro tho su sa u ka bin va po su le le ka sa su sa
chile তাই লগতি পাপ নাই আৰু তাই পুৰাপুৰি পঞ্চৱালা আছে এইটো কাৰণে মানুহৰ লগা পাপ নিমিত্তে মৰিবলৈ ঈশ্বৰ বাবাজে তাইকে পুৰা পঞ্চ লগা বলিদান হৈ কেনে গ্ৰহণ কৰিছে He bore the wrath of God because when he took our sins, he had to face the wrath of God. The penalty for our sins, he paid that penalty. po uka panyava nupho susa putyo susa fakale chile uka phumala uka panyava nupho uka gibor lega dio putyo susa fakatsa susa chade ঈশ্বৰ লগা গুচ্ছা আমি খান ওপৰতে আহিব থাকিয়া লগা খান সব বলিবি তাই এইটো বুখি লৈছে আমি খান পাপ কৰি দিয়া লগা সজাইটো তাই নিজৰ হে বুখি লৈছে There's a song in English we sing, it's the glory of the Lord, it's the love of God. He didn't have to do it, but he did it anyway. sala kakra dinu pagaja asu ka panyava nguka meje ke khila zo posu chmoriwi depo uko khega chala posu chasa ইংলিশ তে এইটো নিচিনা একটা গানা আছে এইটো ঈশ্বৰ লগা মহিমা কাৰণে আছে এইটো ঈশ্বৰ লগা মৰম কাৰণে আছে তাই এইটো কৰিবলৈ দৰকাৰ বি থাকিয়া নাই কিন্তু তাই কৰি দিছে Because he paid the penalty for our sins. There, today, if you believe, he bore the wrath of God on our behalf. And then finally, God the Father, when he surrendered himself totally and fulfilled all the will of God on the cross. God accepted him, the Father accepted him. And he finished that work for us for our salvation and redemption from sins. po matho susa uka panyava maddo susa chachi kele chile musu ginu ko aledi uko ka jok muka phuma uko nunu kella lega do matho susa rhalega do matho susa chachi kele susa sabyo ko chasade তাই আমি খান লগা পাপ লগা সজাই খান সব তাই নিজৰ হে বুখি লৈছে তাই পৰা আমি খান ওপৰতে আহিব থকা লগা ঈশ্বৰ বাবা লগা গুচ্ছা সবটো বুখি লৈছে আৰু তাই এনেকা কৰি দিয়া কাৰণে ঈশ্বৰ বাবা পৰা তাইকে গ্ৰহণ কৰিছে তাইকে একটা বলিদান বনাই দি কিনে আমি খানকে উদ্ধাৰ দিবলৈ আমি খান লগা পাপ পৰা আমি খানকে ৰক্ষা দিব কাৰণে তাইকে লৈ লৈছে That is the glory of the Lord. That's So- the love of God. so uka panyava zapu zayemu puke khriwe এইটো হে ঈশ্বৰ লগা মহিমা ঈশ্বৰ লগা মৰম If you haven't surrendered your life to the Lord, like Brother Martin said, he was only at 15 years of age, in his teenage, but if you are here, you're a teenager, a young person, you may be an adult, if you still haven't surrendered your life to Jesus, now believe what he did for you and repent. Be sorry for your sins and repent of your sins. Confess your sins and invite Jesus into your life as your Lord and Savior, as the one who died for you and rose again. uko brahma tini po katsake me po ti checker pungu pa katsake po uko Jesus Christ susa jachile kata tsuzo semhedi nori susa sasikatsa rionu baliro nori Jesus Christ na shasagaza susa putsa uchiledi no thenu inke jok muka phumagala thenu ka dile Jesus Christ lebe inkela ke le susa chakile chaleje আজি ফুজৰ আমি খান লগা ব্ৰাদাৰ মাৰ্টিন পৰা কৈ দিয়া লগা হিচাপ যে তাই লগা উমেৰতে 15 থকা সময়তে তাই ঈশ্বৰ যীশু খ্ৰীষ্টকে জানি পাই লৈছে আপুনি আজি ফুজৰতে ডাঙৰ মানুহ থাকিব পাৰে এনেকা টিনেজ টি থাকে আছে পাৰে ছোট বাচ্চা কান আছে পাৰে কিন্তু ঈশ্বৰ যীশু খ্ৰীষ্টকে আপুনি নলৈ কিনা থাকিছে গলে আজি ফুজৰতে আপুনি লগা পাপ খান সবটা আপুনি স্বীকাৰ কৰি দিবি ছাৰি দিবি মন গৰাই লবি আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি এইটো ৰক্ষাটো পাই লবি Hallelujah. Let's thank God for such ones whom God is touching right now and He's saving them from their sins and cleansing them through His blood. Let's thank God for them. Shall we thank God? je do ha semhedi uka panya chuminye chirkala le mosi je do semen ka ba semekala sa ka bala uka panya ba chega cha so chedaka এইটো নিচিনা মানুহ আজি ফুজৰ কিমান জন আহি কিনে আছে উদাহৰণ পাই কিনে থাকিয়া কাৰণ সব তেইছো তাই খান লগা পাপ ৰাজাই খানকে চাফা কৰি দিয়া আছে উদাহৰণ দিয়া আছে এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিব Hallelujah. Yes, Lord. It is your glory. It is your love, Lord. You didn't have to do it. You did it anyway. You paid the price that we could never pay. You took on and you are taking all our sins away. Thank you for saving many this morning, oh God, from their sins and giving them that gift of eternal life. We thank you, Lord. Now, we see, in order for God to bless Abraham, first he had to come out before he could enter into the land of Canaan. Teria tho uka panya ba Abraham kala le gadola po tiopar rie morshaba sezenu po kanan kidzenu lele ke le susa chele do gazala এতিয়া আমি খান দেখিব পাৰি আছে ঈশ্বৰৰ পৰা আব্ৰাহামকে আশীষ কৰিব পাৰা লগা আগতে তাইকে তাতে পৰা বাহাৰ ওলাব দিছে আৰু তাই কানান লগা দেশ নাপঞ্চা আগতে তাইকে আশীষ কৰি দিছে That's why I shared with you. First,
experience of coming out is leaving our sinful life and sinful sins and sinful life and repenting of it and coming to Jesus. Zakaria tho tyo parno ka cha so so pacha uli ro we ka phuma ka lu no ugo tyo parle morsho sidi ugo ka phuma ka la ugo thanu ke dile ka cha so so chele morsho ताते प्र बाहर उलाई लो भी इनका ख्वाल होगा सबसे अनुभव पहला अनुभव जो हेले अमेरिकन लगा पाप गलती काम हुक्म बंगाई जाए तो कन सो प्र अमेरिकन बाहर उलाई लो कि ने यीशु की जानी पाई लो बोला गया He was called out of that Mesopotamia of Ur in Babylon to go to the land of Canaan. po Mesopotamia ka cha vodi kaldianu ka ba or ka cha rnau no Babylon sun no pobo kanan va ka dala pobo tyo parno ka cha so so puri कनान लगे देश से जबो डिबो करने सोडे टाइ की टाइ ठका लगा मेसोपोटामिया कल्दीस लगा ओरटे ठके होमोइटे टाइ के बाहर उला भी इनका माटी से So what is it the type of? God is calling us out from a sinful life and calling us into His eternal kingdom. so pacha uli ro ugo bo ka phuma ka lu no tyo parle la di vodi po ke cha che ke dinu vole ga do so so puba इधर लगा मतलब थे सर अमेरिकन के अमेरिकन लगा पाप जीवन पर बाहर उलाई लोई के नहीं टाइ लगा अनंतन ठका लगा राज ती माटे आसे So listen carefully. It's not just a message just for you to have a message of Sunday morning. I came to church, I heard the word of God. No, it is about your life, your eternity, eternal life in eternity. no ren me nyole je ho ha a dyo ba me ti bodi ren ka ba bo zo ka cha so so sida he deri ho ha inka cha che ke ri kal hu lan no ka pa tha die ka chala no me nyu di ti choti ro chiri ren ba li je बाहर बहाल पर होनी भी इधर तो अपने कन्वेंशन ती संडे मीटिंग ते आही के नहीं सर कथा तो होनी लोई शी तो करने ही न होए किंतु इधर कथा तो अपने लगा जीवन करने आसे अनंतन लगा राज करने अनंतन कथा खाना The से Holy Spirit helps. I try to make it as simple for you to understand. kama sor bo christi bo ka ro thon no ne bo chile ka do so sa bo ka cha de पवित्र आत्मा मदद करा लगा हिसाब ते अपने घन के बुझे पाबो करने विशेष साहस बनाई दिबो Right. So now let's get an understanding a little more about this land. From Acts chapter 7 verse 5, God took him to that land, but He didn't give him any possession in that land. But God said, I will give it to you as your possession, for a possession, and to your seed after you, verse 5, when as yet he had no children. deri uko haka chko kenye pengunu prosero uko chunungo kele game po ki jisunu pijo puri robia po chka cha susa chmozo ski po nyonyo ri zori ni ko ka penva poki po ka cha nse nyebu nse nyeko bu ha ko wedio ka cha susa pusa Acts chapter 7 verse 5 थे अमेरिकन पूरी बोले फरिया से वो तो देश से टाइ के माटी लो पचोरी सो तो टाइ के एक को भी दिया नाई किंतु एक को नदी गिना ठके लगा होमोइटी सो ठके कोई आंसे ये तो कान सब तो होले मैं अपनी की और अपनी पीछे दे आही बोले लगा बच्चा खान प्रपाई लो बोले मिराज होई के न दिबो Now, how does the Old Testament patriarch Abraham's life relate to our lives in this New Testament? kim hedi ka thola sa ke we ti no ko puchao abraham we vori ko ka thola sa ka sa ti ho no vori ko ze ke pero more susa ze ke kheke cha su chabaga इन्हें कहाँ से गुले पुराना नियम थे अमेरिकन आगे जाए जा लगा बाबा अब्राहम लगा जीवन थे अमेरिकन इटे नतुन नियम लगा मानुकान साथे किन्हें का नाप करीबा पारिबो Now, this text this chapter 7, we are going to refer again and again, so you may want to keep a bookmark there. And the next chapter we are going to refer to for the next few minutes is Romans chapter 4. uko ho ha makatsugo tenye tu the ho ha moho pamu le ka cha su chada dio slani ko chu sari labale deri uko cheli ro romie ko the thau nu mohla do Acts chapter 7 थे अमेरिकन बार बार इटे सत्य नाप करी था कि बोले आंसे ताते अपने का लगा बुक मार्क तो रखे बो पारिबो इटे अमेरिकन रोमन्स chapter 4 सबो All right. Now, in Romans chapter 4, here we see in verse 17, God said, I have made thee a father of many nations. uko dieke tenyu nu mohosoro hanu pu pu ka cha a susa seye ka krala ngu pukru susa chsade idibu Romans chapter 4 verse 17 टी सर को यहाँ से हम ये अपने के बेशे जाते खान लगा बाबा बनाई दी से When he had still no child, the child that God is speaking of is the child, the son of promise that was to be born through Sarah, his wife. punyo susa sara
propia ga za nyo saragi no penyo dio ga za susa chiri punyo susa penyo formula ঈশ্বৰ তাইকে এইটো কথা কওঁ সময়টোতো তাইৰ লগতে বাচ্চা বি থাকে নাই ঈশ্বৰ তাইকে বাচ্চা একটা দিব এনেকা কোৱাটো কসম লগা বাচ্চা যোনটো সাৰাৰ পৰা জন্ম ল'ব থাকিছে এইটোই থাকিছে Now, God said in Romans chapter 4 verse 16, the word of God says that therefore it is of faith that it might be by grace to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. sloko kursor nu keleke me nguke mejola kepelegino petebu prakasu ngule tiodi su thejonu ketiokolar bimo deri uko pete pochao Abraham kepele jonu ketio ke busu ngupele ketu lazo idipuba কসম কৰি দিগেনা থাকিয়া যে সব বাচ্চা খান সব বিজন খান পৰা পাই ল'ব দিব কাৰণে এইটো বিশ্বাস পৰা আৰু এইটো কৃপা পৰা পাই ল'ব আৰু এইটো খালি নিয়ম লগানো হয় আৰু এইটো কিন্তু এইটো হইলে আব্ৰাহাম লগা বিশ্বাস পৰাহে হ'ব তাই হি সব লগা বাবা আছে By the way, when God said, I've made thee a father of many nations, in Genesis chapter 12, verse 3, God said, in thee shall all the families of the earth be blessed. so she uko keriki thoker kinje senungo kelgeme nginu kizunu seye petebu thejangu le dio idipu আব্ৰাহাম কে সব জাতি লগা বাবা এনেকে কি কাৰণে মাতিছে কইলে জেনেসিস চ্যাপ্টাৰ 12 ভাৰ্স 3 তে আমি খান দেখি আছে ঈশ্বৰ তাইকে কৈছে আপনি পৰা হে পৃথিৱীতে থাকিয়া লগা পৰিবাৰ খান সবটা আশীষ পাবো So now, so therefore, he believed what God spoke. That means he believed, like we are believing the gospel, he believed the good news that God gave to him. sla Abraham we u kapne ba puki dille ki jo bopie puki pusi poso se pelle ke jo chele u kori je dille ke vir nadi pelle ke bagam he ঈশ্বৰ বাটাইকে কৈ দিয়া লগা কথাটো তাই বিশ্বাস কৰিছে এতিয়া আমি কান সুসমাচাৰ কথাকে কেনেকা বিশ্বাস কৰি আছে এইটো একে নিচিনা ঈশ্বৰ তাইকে ভাল খবৰ দি থাকাটো তাই বিশ্বাস কৰি লৈছে So there's a verse that says, those who believe in this New Testament, they who are of faith are blessed with faithful Abraham, according to Galatians chapter 3 verse 9. u ko sla galia the ko se thappo nu ke lege me u ko chunu ngu ke cha kepele nu luke to ko Abraham kepele jedi thejap फलिया इदि थुबेबा Galatians chapter 3 verse 9 लगा हिसाब थे जुन मनु घंट विश्वास लगा सी ताई घंट हसा थाकी लोगा अब्राहम साथे आशीष पाई लुइसी Verse 7, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. sla thenyunuri ko ngu kele keme siro ke hu puri pele kele me Abraham nyunyo ko zo cha sileje इदि पुबा सात वचन थे निकल लिखिया से जुन जुन मनु घंट विश्वास करी थाकी आंसी ताई घंट अब्राहम लगा बच्चा खान आसे को तो आपने घंट जानी भी So while we are here at Galatians 3, you may keep a tab or something there. We're going to come back to this verse again. sio ko galatia nu ba ka jigi nyo ko bookmark page nu ba le ke nyori ko chu mohla bodo Galatians 3 टाइम का नको वापस आइबो ताते आपने घंट लगा बुकमार्क तो रखी भी Right. So it says here in Romans chapter 4 verse 16, therefore it is of faith that it might be by grace. musla ko romi ko dieker sonungu kele keme kepele mungu keme je ginur bizo ka cha ko ngule ba Romans chapter 4 verse 17 टाइम 16 टाइम खान पुरी लो लगा हिसाब थे इतो कृपा लगा से इनेका कोबले पारा तो इतो होबो करने विश्वास থাকিবো লাগে So now in chapter 4 verse 16, you can see the promise that the promise may be sure to all the seed. Now it differentiates one seed which is of the law, another seed which is of the faith of Abraham. musla ko dieker soru hanu moho ka jigi ko matcha ke nyi so sangu lege bi kepele ginu no puchio muthe jogi no puchie ka pu ko hanu se khokri ka cha muri ngukri ka cha hanu silibi सोलो वचन ती लेखी केना थाकिया लगा हिसाब ते सब बिजन प्रा इतो लगा कसम तो पाइ लबो लागे इनेका कोया से येथे दुईटा बिजन के बिलेक करि दिया त आसे एकटा तो नियम प्रा पाइ लो आरो दसा जो अब्राहम लगा विश्वास प्रा पाइ लो That which is of the law are the children. First, Isaac was born, the son of promise. Through Isaac, Jacob and Esau were born.
and Jacob received the blessing of the firstborn instead of Esau, and through the firstborn, the posterity is counted. So through through Jacob, then he begat 12 sons and one daughter, and so they became the tribe of Israel who received the law. Musla oko Abraham gino Abraham Isaac Jacob semhiri penyo vorga tsagile tsele mo Jacob gino unyo kerkenye susa penyo vorga le tsele bo athejono no penyo vorga tsa unyo ko chvorga tsa susa cha Itu garne nium laga bacha khane nika khwa laga matlab to holi Abraham pra Isaac paishi Isaac pra Jacob pra Esau ke paishi Jacob to poila lora thakishi aru Jacob laga lora khan to kan baro jan thakisi itu baro to lora khan pra Israel laga jati khan hoi jaisi tai khan he nium pra pai lo laga bijan khan ko yase. That is the literal seed which is of the law. musuro haidi kijino penyo vorga tsa unyo ko musu thejono no penyo vorga tsa unyo ko de Itu to hoile ite operativity thakya laga bijan khan ase itu to nium pra pai lo laga bacha khan ase. What is the seed? That those who are of the seed which is of the faith of Abraham, that we see in Galatians chapter 3. Dari Abraham kepele gino puchi vorga tsa so liro ko labori Galatia se chuno no mohosoro shilido Kintu Abraham laga vishwas pra pai lo laga bijan khan to hoile American Galatians chapter 3 to puriase. Galatians chapter 3, verse 16, it reads, Now to Abraham and his seed were the promises made. He said not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ. Sokir surunu ko pragele kemi siro Abrahamu po yeu la pragasazo po kakradze pudi jeko isimo deri porbi pudi she njio ki kasazomo suwe Christo zo iba Yete solo vachanti koyase itya Abraham arutai laga bijan logote itu kosam kotha tu banai dise tai yete apne laga bijan khan ineka beshi thakya ke koa nai kintu ekta ke koise apne laga bijan koyase itu Kristo ase. So now Christ is seen as the seed of Abraham. Slow ko hanuno Christo we Christa Abraham jio ka cha o hanuno nguleba Yete ami kan jani pai lo to Abraham laga bijan ko to Kristo ase. Now, what did God say? so ko ka banjak zo poga Isor ke koise One day, God confirmed that promise God gave to Abraham with an oath. kunyabo o ka banjak po pragasa dio susa pragasa dio puki pukacha susa chasa Isor pra Abraham ke kotha koigena thakya to tai kosam korigena itu ke takra banai dise. Genesis chapter 22, verse 16, God said, By myself I have sworn, said the Lord, for because you have done this thing, hast not withheld thy son, thine only son, verse 17, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. musala keriki tho me pe kenye kersuru kerthinye choko mohosoro o ko chunungu kelegeme dishe nyepu puya a athyo a se resede mu nom ha ho chekesala ntyo nyopelu sepata kamula thejanu jabye nzdio siro tsepekra ka chunuri nbu njiobu tsepekra pye tigi thamgo je su zakazakiri kragaza thesnyo mhega tsusa tsisidio siro nseyime buri mumko chare pe vilidio idipu Genesis chapter 22 verse 16 17 te इनका कोई यहाँ से ईश्वर पर इनका कोई यहाँ से अब्राहम के अपने इटू काम करी दी सी अपने निजो लगा एक थका लोरा एकला उले भी अपने ना छाड़ी किने इनका कोई दिया निमिति अमी अपने के कसम दिया से अपने के आशीष दिया ते मोय अपने के बेश आशीष करीबो अपने के बेश भराई जाते अमी अपने लगा बिजन खान के आकाश ते थका लगा तारा खान निशिना बेश बनाई दिबो और समुद्र किनारे थका लगा भलू खान निशिना बेश बनाई दिबो और अपने लगा बिजन पर है ताई लगा दुश्मन खान लगा गेस ते ताई है जितिबो. So Isaac, then the children of Israel were born later through Jacob. So they are mentioned here in chapter 22 verse 17 as the sand which is upon the seashore. 하노고 이삭 요 제곱 뭐 제곱 기는노
apunyo mi ker kenye ko tezo no penyo pro ko ko so ko jepo ba mu ho ko kiriki to me pe kenye ker tenyo ngo ke ke mi bu jesu ko zika za khe tesinyo so so de sidio ka zaka ba so ko pu ba Isaac lagalora to Jacob thagisi to Abraham Israel lagabarota jati kanaisi aru ite chapter 22 laga verse 17 te ami kan dikhi pa se isor ko ishi apne laga vision kan to le samudra kinar te taka laga bhalu kan nishna takibo. But the first part of it, I'll multiply thy seed. Christ is the seed of Abraham. 네 somhozo nuliro jabian tsede idipo amo kristawe jisu krista gineno Abraham gineno thajja so so sabakra ka so chaba Ito आगे रिटाई को यहाँ से हमें अपने लगा विजन के आपको बेश भराई दिबो अब्राहम लगा विजन तो क्रिस्तो से I'll multiply thy seed as the stars of heaven. We are that stars of the heaven, spiritual seed through Christ, the seed of Abraham. 안지오 소서 자비안 tsede chiba muso jisu krista gineno so so ukobo tigi temmokom hidi jabiyo ko tsidi ukobo bakra ka so so chaba हमें अपने लगा विजन के आकाश ते थका लगा तारा खान निशाना बेश बनाई दिबो इने का क्वाट हमें खाने आत्मा फिनी इतो आकाश ते थका लगा तारा खाना से इधर तो होइले क्रिस्तो जिन तो अब्राहम लगा विजन आसे टाइप रबिशी उठी जा खाना से How does that take place? If anybody here wants to enter into this blessing, listen carefully. 사냥고 그 후불이 하우노 태자 호노 레렌나 물렌나 그 처발이로 메뉴디르는 리제 अपने कान की मान जनी तो लगा आशीष तो अपने कान पे भाग करी बोलो मान आसे मरोम प्रहोशार प्रहुनी भी By the way, just to slightly speak something more on this point, which is not exactly what we are talking about. Those who don't have children, you can claim this faith of Abraham, the steps of faith. There are 7 steps of faith from verse 17 onwards. You can claim, especially this first one, he believed in God who quickens the dead, who gives the resurrection power to give life to the dead parts of our body. So though you don't have any children, those who didn't have children, they claim this promise like Abraham, they were blessed with the blessing of the offspring. 그거 슬라 갑부갑바 짜오는 뭐디 부케자 바가자 소서 처바다 내녀고 미고 그 후미에 후미니 니뉴뉴 저가자 서바리로 니고 디어호하 비니 비게레 베비게레 소서 철레제 그클라운나 소기네노 우카빈바 차비니 저거도 소서 철레도 इचे हमें कबूले ठाकिया जो होले कबूले ठाकिया लगा पर हमें बाहर उलाएगी न कोई यहाँ से किंतु अपने कान के मान जन बच्चा न पाएगी न ठाकिया से अपने कान ते इटु कसम कोठा कान होले दूरी के न मांगी बो परिबो इसो लगा कोठा जे कोई यहाँ से इसो लगा आत्मा पर हमें कान की जिलाई दिबो हमें कान लगा बदन ते मुरी के न ठाका थिक प्रकाम न चली के न ठाकिया खान सब तो जिंदा करी दिबो परा लगा से इटु करने अपने ईश्वर के मांगी भी और ईश्वर है अपने की छुई दी के न अपने की आशीष करी के न अपने लगा बिजन तो तारा खान निशना बिश भराई दिबो लगे In the Old Testament, the saints, they were perfected in one characteristic. But in the New Testament, we who are called to become like Christ, we are called to attain all aspects of the perfection of Christ. 가톨릭 교회 니리로 그거 가톨릭 교회 누가 마사미 걸리로 맞자 본노르비 그거 빌 찔레게도 수슬라 고 끼래 될 지오고 가톨릭 사티오노 그마 사미 이디 끼레게다고 그거 지수 그리스도 빌로초글레 졸리 빼때고노 비찔레게도라 고 끼래데 पुराना नियम चे ठाके लगा मानो खान से होले एक फिनी ही इटाई खान पूरा परी पंच लो आटो पाइसे किंतु हमें खान जो नतुन नियम खान लगा मानो खान से क्रिस्तो निशिना हबले माटी लो मानो खान से हमें खान तो ईश्वर जिसु प्रकिनी का पूरा परी पंची के ना से सो फिनी हमें खान पे पंची बो लगे James chapter 2 verse 22 says, he was one, the perfect, is an example of one who was perfected in faith through his works of faith. James chapter 2 verse 22. 그거 자콥 케니에 메페 케니노 응오kel레게 메 시로 케펠레 마토 제디 마츠바무 마토 기노 케펠레 수사 츠치 스와데 시바 James chapter 2 verse 22 टी कोई यहाँ से ताई पर विश्वास लगा काम करी दिया पर ही विश्वास टी ताई पूरा हो जाए से What about us? We are called to attain that perfection of faith, perfection of love, perfection in holiness by doing the will of God and becoming perfect in the will of God. 시로 그거
ke pelenu ke krienu bo ya dinu sa o ka bne ba ke kresedi bichile ke dola o ko ke ka so sa chele da Aro ami khan to ki hobo lage koile ami khan be so nichina vishwas ti pura puri ponche lobo lage morom ti pura puri ponche lobo lage pavitrata ti ami khan pura ponche bo lage eru pavitra ti pura hobo garni so laga ichha ko rati be ami khan pura puri ponche bo lage His experience is an outstanding experience of faith, and you can claim he is a God who quickens the dead. He believed in the resurrection power of God, God who raises the dead, even being an Old Testament saint. God gave life to his body, the power of God went into him, and Sarah's also body too, and granted them that healing. They got the child of son of promise. hawa anu segacha so sa chaba ke klom ne o ka bne ba dionu no ko ngok le khme o ka bne ro po tio po mo so sa chape risidi so ginano saraburi po jo ji ka so sa chakele chele mo so ginano o ka bne ba phrakas dio so gi chachi gele so sa chele ga jala Iso laga atma to hoile ami kan laga badan ti mori jai kena thakia kan sab ki jinda kuri dibo phara laga to thakia ansi Abraham ke hoile bi tai bura hoi ja pachu dibi so tai ki julai di si Sarah ke hoile bi tai laga gaunte ki mori kena thaki se iso itu ki julai di kena tai jon ke itu bacha pabule bi so modot kuri di si to ekhi nishina iso ami kan karni bi kuri dibo paribo So to get a better understanding about the 7 steps of faith of Abraham, all the servants of God here at your disposal, go and speak to them and get all the points. o ka pele thauno macha thenyeno bi lo chole mor ke so pucha so ko sile ke dola o ko ke me sami ko hakya o ko khim ho ki ba nyogo ko ki podi macha so ko ke chomenyu li si gele chele विश्वास लगा सत्ता कदम खान टाके आसे एडोगान की आसे जानी बोले मन टाकिले सेवा मानुगान सब ता अपनी खान करनी टाके आसे ताई खान लोगोटी जाएगी ने एडोगान जानी लोबो पारिबो Next, continuing what we was just speaking about, to become those who are of the seed whom God said He will multiply as the stars of heaven. For us to become as the stars of heaven, u ko bo u ka ka pu ko bo pu la bo ke dola u ko bodi thamma ko mhiri pu jiu che ke dola no आमी खान इटे कोई थका टी वापस जाबो इसर कोई शे ताई आमी खान के आकाश टे थका लगा तारा खान निश्ना बनाई दिबो इटो करने आकाश लगा तारा खान हबो निमिते go read down chapter 4 all the way, verse 23 onwards. It says, Romans 4, now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, and verse 24-25, but for us also, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Verse 25, Romans chapter 4, verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. mu ko pu cha ko sila bo ke dola romie ko die me pe sem pe diem pe pengu ko mohosoro u ko chunu sigele khapie pu gi ka sa so polar bi thu ka sa zomo ke shin no unye pu jisu perhila ka so pelele ro ke mi tho so pie ungori zo dio u ke jola pu bu shemu u tsake mi tho le ke dola pu perhila le shiba Romans chapter 4 verse 23 to 25 टाइमी खान पुरी बोले परियासी इधर जो ताई निजर एकला करने लिखी दा ही न होए किंतु आरु ताई के ही कौन होए किंतु आमी खान करने भी लिखी दी कि ना से आमी खान प्रा ईश्वर जैसे क्रिस्त तो मुरिया प्रा जिंदा उठी लोइसी इन्हें का विश्वास करी लोइले आमी खान पे इटु पाई लोबो ताई की आमी खान गलती करी दा करने ताई की जो दी से आरु आमी खान की एको गलती नाई इन्हें का बनाई दी बोले ताई मुरिया प्रा जिंदा उठी से First point already I shared with you earlier. Repent of your sins, believe Jesus died for your sins and rose again, and confess and forsake your sins. He will justify you, He will forgive you, He will remove your sins and look at you as though you never committed those sins before. That's called justification. sala macha griyo pukatyo sosaliro no susa nke joko mo prale thanu ke dilen ke joko mo prale so sidi no o ka binba lebe pelele di leben kala kelo chele so sidi no pele kata chele daliro no pum hojuno poen ke joko mo ko pette ko vaben chwa ka ginu no bu me thole ka chele kata susa chele te ka susa puli bide हमें आगे जो आपने खान के कोई ध्यान निशिना किथे हमें का निजो लगा पाप खान तो हमें खान जानी पाई लो बहुत टिटे हमें खान मन गुराई लो बुलागे एटो कान के स्वीकार करी बुलागे एटो कान के ईश्वर के कोई दिगे न छाड़ी बुलागे एटो कान करने हमें खान माफ पाई लो बुलागे टिटे इन्हें का होइसे कोले So here it is written to him, it will be imputed to us for righteousness if we believe the gospel. So what is that we have to do to believe the gospel? Matthew chapter 3 verse 15. uko
mati ker se ker pengunu mohosoro ugo tsunu nungu kele we ubu ke me tho ga cha me tho de ga cha so se lele ga dola we pelledi so se lekele so se chele mor shoba Matthew chapter 3 verse 15 te लेके छ क्या हिसाब ते हामी खान के एको गलती कुरा नाइ पाप कुरा नाइ कोइ के हामी खान के ग्रहण गरिबो गर्ने के खुरिबो लागिबो Water baptism is the commandment of the Lord Jesus. Water baptism is the counsel of God. Even in the time of Jesus, it was the counsel of God. sala jilu ke pa ha u ke bnya pa dear hobozo mo ke bnya ko bo chinu ga cha azabo zo mo Jesus Christ tiu no zo sheri su ha chinu ga cha azabo cha ga cha bo cha zo पनि बप्तिस्मा लोवाटी कोठा मान्य तो होले ईश्वर लगा सिकाई दियो कोठा आसे इदो ईश्वर पर हामी खान के हुकुम दिया लगा कोठा आसे पुराना नियम लगा होमय पर होले भी जिस लगा होमय ते इदो तो टाइ लगा सिकाई दियो कोठा थाकिसी Because Adam failed, he was called Son of God. Jesus, the Son of God, had to take this human form. He is called the last Adam. mo adamre u ke bnya jo idi ke zo de po kra ka talan no Jesus Christ bo chudi ke bnya pa bo themenyo chdi chudi adam ke nyu su sa ke ga cha su sa chada आदम जुन टके ईश्वर लगा लोरा इनेगा माटी थागे से टाइ नौरा हो जाय से तो करने ईश्वर जिसु जुन ते ईश्वर लगा लोरा से टाइ मानो लगा नोक्सा लगाई लोई के न टाइ नीचे नमी आही से ये तो करने टाइ के दूसरा आदम इनेगा माटी When Adam disobeyed God's commandment, he became the enemy of God. The Lord Jesus came to obey and fulfill all righteousness. And finally, he did that on the cross. He fulfilled all the will of God. mo adam we u ke bnya pa de ze mo ka tala bo ke bnya pa ngumo chada de Jesus Christ ki je no chudi u ke bnya me do ko chachi ke le chele jidi u ke bnya ko pu ga cha bo de ko pe te ko chaze chi ke le so cha 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 sa आदम तो होले ईश्वर लगा कोठा मान्य नाइ इनेको हबरा टाइ तो ईश्वर लगा दुश्मन हो जाय से किंतु ईश्वर जिसु ख्रिस्ट तो नामी आही के टाइ तो कोठा मानि से कोठा में माने लोआटी टाइ ईश्वर लगा धार्मिकता पूरा करी के टाइ क्रूस तक जाय के ईश्वर लगा इच्छा पूरा पूरी करी दिसे He didn't have to take baptism. It was a baptism of repentance. But he did it because he had to obey the counsel of God to fulfill all righteousness, to do the perfect will of God. Jesus Christ po ka phuma bori chmo dre po u ka bnya pa su sa kemya tho ha tho su sa chachi le do la po jul ka pa no su su le ka cha su cha पनि बप्तिस्मा लोआटो होइले हामी कान मन घुराइ लोबो करने लोइ थाके ईश्वर जिसु इटो लोबले दरकार थाके नै किंतु ता ईश्वर लगा इच्छा पूरा करी बोले ईश्वर लगा धार्मिकता के पूरा करिबो करने ता इटो करिबो लागिसी So he did it to be an example for all of us. So no one can say, I don't need to take baptism. po u ko lat thakki bo chasa zo sala u ko mepuri nomo ari mepuri ajulu po mori vi ga cha so puli genja ता इटो करि दिया तो होइले हामी कान सब करने एकटा नमुना राखि दिबोले करिसे ता इनेका कुरा ब्रा हामी कान एक जन पे मै पनि बप्तिस्मा लोबले दरकार ना इनेका नकबु दिबोले So the baptism you must take in the New Testament is a baptism in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost, by immersion and at the hands of a spirit-baptized minister. sala ka thola sa ka satti unu ha na julu pa ga cha u ka pnya pa po nyo ka ma sar po zanu no mo so u ka pnya pa le thomie rop pa bio chu ga cha le thomie jeno mo so mo so jeno no jeno pa le di bo julu pa ga cha so cha ga cha chele mo so नতুन नियम लगा हो मै हामी खान पानी बप्तिस्मा लोबोले लगा जो होइले हामी खान ईश्वर बाबा ईश्वर जिसु पवित्र आत्मा लगा नाम ते हामी खान के पानी भितर दि डुबाई दि के पवित्र आत्मा पर अभिषेक करी लो लगा ईश्वर सेवा मानो लगा हट्टी लोबो लागे That is the step for you to come to the place to become the stars, one among the stars of heaven. mo no vodi tigi vodi themma ko donu po themma po chele ke dola no susa khadu bo chegdo ma tho su ke ri tho अरे जो होइले आकाश ते थका लगा तारा खान मौजूद अपनी भी एकता होबो करने पहिलो लका दम ते तो आसे So for approve of the example of the Lord Jesus, to fulfill all righteousness, he obeyed the counsel of God. Matthew chapter 3 verse 15, Jesus answered John the Baptist, let it be so for now, for thus it is needful for us to fulfill all righteousness. Then John the Baptist baptized him. mosla hanu ugo mati ko se ker pangunu prosero hanu ngele u ka bnya ke mi tho ma tho bo chachi le ko dola jisu e johan ki puri she jewe jova sisje ubu hatsele ke za ke hu puri cha liro
potu zo ka chala sidi Johan ki pusa हामी खान सब गर्ने एकटा नमुना तो राखिदिबो गर्ने ईश्वर जिसुটো पानी बप्तिस्मा लबो लागिছি एटो गर्ने मैथ्यू चैप्टर 3 verse 15 ती जिसुটো जॉन द बैप्टिस्ट के कोई आसे इत्ते गर्ने तो इनेका हबले दिबी इनेका गुरिले हे ईश्वर लगा सब धार्मिकता तो पूरा हबो एटो पछोते हे जॉन द बैप्टिस्ट जिसु के बप्तिस्मा दिसे What is the blessing that makes us to become the stars of heaven? व पुदी तिगी थे मगो छलेको दला थजा कि जबो पे उच्चक जगिनो सोचल्यागा के आशीष पर हामी खान के आकाश लगा तारा खान बनाबले दे Galatians chapter 3 verse 14. After obeying the truth of baptism, then God promises that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. मुसला गलतिया को से केर पेंगु नुंगु के लगे में वोदी जुदा के मोको जुदा ये को थजाओ जुदा के मोको की वोले को तोला अब्राहम के पिले के बाउ गिने न सोंगुले दो के चोको फलेवा पानी बप्तिस्मा लोई लो पहुंचे हामी खान की पाबुले लगे गोले गैलेशियंस चैप्टर 3 verse 14 दी निका लिखे आसे अब्राहम लगा आशीष तो होइले ईश्वर यीशु ख्रिस्ट रहे जुदा न हो मनुखा न पौटी बे आहिबो करने इनेको हो हामी खान पे विश्वास करी लोई के विश्वास रहे आत्मा लगा कसम तो पाई लोबो करने You have to be one among the stars of heaven, because that's not the end of it all. There's a land for you to possess eternally. नवतिगी थम्म बच्चो मरचो मो सुचगले गिननो न सुस सरबी जमो दरे न सिलपति कि जबपति का छाछेक तिगी न न्याप मुले मरसो का जसो बागजला आकाश लगा तारा खान होई जाइले तो आपने करने काफी नहीं किंतु स्वर्गोटे अनंतन अपने के पाई लोबो दिबो करने एक ता जगह को ठाके आसे One of our very senior chief pastors, Deputy Chief Pastor S.B. Ernest, who was an apostle who, through many of the doctrine books were written. उको चीफ पास्टर डिप्टी चीफ पास्टर से कबो पास्टर S.B. Ernest है उको कहू लसदा का क्राथु गजा लसदा का क्राथु वो गजा बुआ हामी खान लगा एकदम पुराना चीफ पास्टर्स खान ताकि आसे डिप्टी चीफ पास्टर पास S.B. Ernest पर हामी खान लगा डॉक्ट्रिन बुक्स खान पीछे लिखी किना आसे Because you need the Holy Spirit, and you must have the Holy Spirit for the Holy Spirit to work in you and make you ready for the rapture. वो न कम सर पुंगु लेमोर्सो बीजो के क्लब न कम सर पु थियो वो ससेको गजनो क्रिस लेबी गजला ईश्वर आहा लगा दिन ते अपने भी ताई साथी उठाई लोई जब पारिबो करने पवित्र आत्मा जो लागे अपने पाई लो बो लागे You must know this also. I cannot hide it from you. After the rapture, if you are not taken up and you don't have the Holy Spirit, the Bible says those who don't have the Holy Spirit, whose names are not written in the Lamb's book of life, they will take the mark of the beast and worship the beast, Antichrist. असला न्योके होसे कहते से या कहू पुरी के मसर पुंगु लेमो इदा लिरो ससेको गजतियो न ससेको लेमो दा दो मो ससी गजमिए सुसा के थेमे not थेमियो नंबरो सुसा सेमोर शो गज लेमोर शो गज छदा दियो इतो गर्ने हामी अपने खान के कोई दिया से जुन मानु इते भी इतो आत्मा नपाइकिन ठकिया से आत्मा नपाइकिन ठका मानु खान तो लेसो आहा लगा दिन दे तैगन के छारे दिबो और किते तैगन के छारिबो तैगन तो इतो जुन्दो लगा चिन्त लई लबो इतो चिन लई ल मानु खान सब बोले भी ख्रिस्ट लगा दुश्मन के मान करिबो Your names are written in the book of life, and you repent of your sins and accept Jesus as your Lord and Savior and receive the gift of eternal life. नसला कहीं पर लस दाउनो इंजा थुबे बमो लिरो न थनु के दिलेजे इनके फुमानु न रिलेजे सीधी न कच्चा चे करी सुसंगो के लिए चलीजे अपने लगा नाम तो हले बेरा बच्चा लगा जीवन किताब ते लिखी गिना ना था किले अपने मन गोराई लोबो लगे और डर पाई लोई गिना अपने लगा नाम तो ताते लिखी लोबो लगे After obeying the truth of baptism and being baptized in the Holy Spirit with the sign of speaking in tongues. No, she did- Revelation 13 verse 8 says, the Lamb's book of life, speaks of the Lamb's book of life. Your name will be written in the Lamb's book of life. मुसला उको कहीं पर हो पैसी कसा नुंगो के लेके में इंजा कहीं पर लस दाउन ते कुन्यो कहीं पर लस दाउन इंजा थुबे बमो शो गजा सुसबा मुसला न जुलफरी कमसर पुंगो के लिए सुस चले मोशबा इतो गर्ने हामी खान पानी बप्तिस्मा लोई लोबो लागे इतो पछेटे पवित्र आत्मा पाई लोई गिना अन्य भाषा को लगा चिन भी पाई लोबो लागे इतो गर्ने हामी खान रेवलेशन चैप्टर 13 verse 8 ते पुरियासी हामी खान लगा नाम तो बेरा बच्चा लगा जीवन किताब ते लिखी गिना ठाके बो लागे God will surely fill you. So what did Pastor Espinas say in that message? 그 그빈데 로퍼빈 दूसरा जो मो पास्टर S.B. Ernest पुलिस दाउन की जो थुसगा इसोरे जी होले भी लगा आत्मा प्राप्ति की भराई दिबो पास्टर S.B. Ernest तो लगा किताब टिकी को यहाँ से Knowing the urgency of the
of the need of receiving the Holy Spirit and the shortness of time, he said, if any one of you have not received the Holy Spirit, go and trouble all these workers. Musla So I am telling you also, if you want the Holy Spirit, not get it, children, adults, go and trouble all these workers. Musla lesson sunu po pugaja tugaja nye kamasar po ngule mo liro nye kamasar po we ngule mo so piwa kada putiu we zithobara kazala ropo ngule mo so mo nye su ngule kadala bodi nye lethogo nye khe nye mo kaba lethogo ko ki puleje idipu America laga pastor SB Ernest hele pavitra atma kiman be pailo bole dorkar ase itu jani pailo hoigina aru itu satya homoite kiman be khata ase itu buji pailo opportunity tai taila kitab te likhya ase jude apne atma na pai kina thakile seva manu khan sab ki jaigina digdar di thakibe itu nishna moi be apne kan ki ko yahan se jude apne pavitra atma na pai kina thakile yete thaka laga seva kan ki digdar di thakibi Because of the constraining love of God, we have forsaken everything for the sake of Christ and for the sake of the church. We are here for you. uka beneme ke kriya uki bhag jala we uto uki tege uki grupeta khawadi party ka beneme le thot so chaba sala nyegola so so le thot chedi part hawe Kristo laga morom pramikan ke tani lo karne amikan dusra sob to charigina isor ke seva koribule ahi loise edu seva to isor karne aru apni kan sob karne ase They will pray with you, give you the right word of God. You will surely be baptized because it is your heavenly Father's promise according to Acts of the Apostles, chapter 1 and verse 4. musla uko Verse 4 and 5. 4 and 5. uko beneme dio be nyogo pathas dio mo nyogo kris dio mo sidi ke hubo tso shiri nyogo ke masar pangu ke le chele dio ke klam na phaka choko po diemu pengu be thube ke ba ke me uko beneme phrapi ke dio chu chu ba ke chala अपने कन जाइगन ईश्वर सेवा खान के दुखान खुइली जाइगन पर अपने खान सत बहिबो अपने कन के ईश्वर लगा कोठा कोइ दिबो अपने कन सब प्रार्थना करिगिन जी होले बे अपने कन तो पवित्र आत्मा लगा हक्ति तो पाइलो बो खिले खुइले एक्स चैप्टर 1 वर्स 4 और 5 लगा हिसाब ते ईश्वर बाबा लगा कसम ते तो आसे So when you are blessed with that blessing of Abraham, the promise of the Holy Spirit, then you will be seen as the stars of heaven through Jesus, the seed of Abraham. Matthew's Gospel, chapter 1, verse 1 reads, it says, the book of the generation of Jesus Christ, it says here that the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. musla uko ke masar pangu le ke cha po phrapi ka ba ke masar po so ngule da le ro uko re uko beneme nyogo bu jego bu yego so so che ke so so chele de ke klam na mathi po no ko ngo ke le ke me Abraham nyo David nyo Jesus Christa puchanyo ko za kerolesa how idi thubi ka bala एरो गाने जुदे हामी खान पवित्र आत्मा पाइ लइसे गुले हामी खान बे आकाश ते तका लगा तारा खान निस्ना होई जबो इतो तो अब्राहम लगा विजन आसे और इतो अब्राहम लगा विजन तो ख्रिस्ट आसे इतो तो हामी खान मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 ते पुरिया आसे जिसु ख्रिस्ट आहिया ताई लगा खानदान खान लगा किताब आसे ताई तो होइले डेविड लगा लोरा डेविड तो अब्राहम लगा लोरा All right, so now we have finished the first part of the message. Now the second part of the message, we have to go through many experiences in our lives, and that is how we are going to see the fulfillment of this promise. uko ke pu ke riu ke pu le de se che ke nyu ke pu bo de mo uko haidi bo ke ki hasi ke kris ke kra so ko no jivu mo ke so so chaba हामी खान कोई थका संदेश लगा पहिलो भाग तो खत्म होइसे इतिया दूसरा वाला भाग तो कबले मन थका अंत होइले हामी खान एटु कसम कथा तो पाइलो बो करने अलग अलग अनुभव बेसी पार करि जाबो लागे Coming back now, we are now going to turn back again to Acts chapter 7. la ma ke chego tenyu no chunu mo hala bo de एक्स चैप्टर 70 सबो Here we read what we have to do. The Old Testament, certain sayings are compared to Jesus. The life of Joseph here can be compared to the life of Jesus. uko ke thol se ke wetiu no ke ma sami ko ke lo ase bodi Jesus Christa se ke medze ke so samo pauri Joseph ke lo hari bodi Jesus se ke medze ke so cha पुरानो नियम लगा पवित्र मनोगान कुन बार के जिस लोगरी नाप करिगे न था के आसे ये थे जोसेफ लगा जीवन भी जिस जीवन सत्य नाप करी से Right. So now let us see
read now, I'll read to you from verse 9, starting verse 9. And the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt, but God was with him. 뭐 방가서고 텐예 대표 벌써도 시로 우부자녀고 조셉 무비에 우로다디 보제비 이집누서와 데리 조하바 보제도zo Yate Acts chapter 7 verse 90 puria se kintu poila thakya manu khantu suku juli kina dai khantu Egypt te Joseph ki bikri kuri dise kintu isor to tai satti thakishi. All right, so I want to be more precise in just telling you just the points for time that is for lack of time. So that's why if you take heed, especially if you want to note it down please. 부티가 잘라 하 부자 거바 차가서 뭐다디 모르게 토걸 쓰고 뿌가져서 저보다도 못 요거 모르셔로 요거 더 쓰고 그 쓰고 틀리비 Humoi komte thakya karne he moi kobole lagya khane kobo ito karne apne khan lagile likhi lobo paribo. Micah chapter 6 verse 8 says God was with him. God was with Joseph. So Micah chapter 6 verse 8 says, the Lord, the Lord, he had showed thee, O man, what is good and what doth the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Walk humbly with thy God. 우고 미까 서로 보는 거 켈레케미 녀포에포 기쁘가저노 인티온 르뉴리디 우크 분여버제 소소 띠오켈레 소소 첼레 그클럼 너거 분여버제 띠오케절라 이디 보기 부사 Micah chapter 6 verse 18 निकल लिखा है ओ मनु टाइप पर अपने के की बहाला से जो अपने के दिखाई दी से ईश्वर पर अपनी पर की लोबले मन से ताई अपने के सब जो होली भी धार्मिक प्रकरिबो दिबले दाया के मरम करिबले और अपने लगा ईश्वर सत्य नम्र पर बेराबो गर्ने इच्छा करिया से ईश्वर सत्य नम्रता पर बेराबी. So he was sold into Egypt. That means as a slave. 오에 이집노 부제가와 소소 처와 소소 미디미 척저처다 ताई के इजिप्ट बिक्री करी दिया तो होले नौकर होई के ना पठाई दी सी. So when you compare it with Christ's humility, Philippians chapter 2 from verse 7 and verse 8, Jesus, he took upon him the form of a servant. Servant means bond servant. Bond servant means slave. 우고 지수 부터 부처कर 녀가저 모호슬로 우고 필리피고 테니에 테타우는 모호스시 지우 테미오리 처 미디 척길레제 부터 부처कर 녀비에 크루세우누리 디제소서 척길레 척시바 इधर नम्रता करी लो तो होले जिससे लगा नम्रता लोगों जी नाप करिया से अमेरिकन फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 70 पढ़ी बोले पढ़ा तो होले ताई ताई निजोर के एक को नोहा बनाई लुई से एक ता नौकर लगा नक्शा लगाई लुई से इधर नौकर को तो होले होदाई ताकि करने बंदी के न सेवा को नौकर को राके नाप करिया से. I'll repeat that point. Jesus' humility, he took upon him the form of a servant. In verse 7, servant means bond servant. Bond servant means slave. So that is one of the steps of the humility of the Lord Jesus. 지수 부터 부처कर 녀가저 타우 어서서 부스는바 뭐 테니는 응고kel레케메 부터 테메 리우 첩디 कित्योमी हेगले चले सोसा मिदिमे चकच सोसा पुदे हमें अपने घन की टॉक आपको एक बार जनाई दिबो जिससे क्रिस्तो लगा नम्रता तो क्या आंसू कोले ताई निजोर के एक तनोकर लगा नोक्सा तो लगाई लोइसी इधर नोकर तो क्या आंसू कोले ताई हदाय करने बंधन ते थाके के नोकर को रात लगाई लोइसी. Okay, so 5 points I mentioned, verse 7, 8. So if you want to know more, take the book called Human Pride and Divine Humility. All will be explained, but let me explain what I would like to share from this message. 녀고 마차 시산을리로勒서다 수서리바 스라녀고 수지 크플리비들이 어째뿐는가 봐 오게 뭐 디오노노 바 차사서게레서 쳐서도 इधर नम्रता ऊपर ते कदम खन के ने कहां से अपने घन पूरी बोले मन था के ले अमेगा लगा किताब एक था क्या से मनो लगा फुटानी और सरके ने का नम्रता था के सी तो अपने घन किनी के ना पूरी बो पारी बो किंतु आज फुजो हमें अपने घन के कबोले लग गया तो कबो. A slave cannot demand anything. He has no right of his own. Even so, the Lord Jesus gave up all those rights in that going through that step of humility. He could have justified himself before Pilate. Pilate would have released him. But there he didn't fight for his right. It was the will of God for him to be crucified for our sakes. 지수 그리스도서 시리 그 디미보 수사 미디미보 미데
me kito mi bo mi de puto pukhat lo cho puto putsakar nyo chiga wa so sa chawa bo ka ben nyo zo mu bo puto putsaka me zaga za pilat mo zo shiri puto putsaka me zaga zo chali viwa zo diri bo ka ben me do chi do di puto putsakar nyo chigile so sa chale itu jaga jami kan dikhiya se tai be tai nijo laga kobole phara te thaki se pilot laga gete hole be tai nijo laga dharmik thaka ठीक ठका तो कोई से कोले ताई के छारी दिबोले पारा था कि किंतु ताई निजो के नम्रता करी लोबो करने हमें कन के दिखाई दिबो करने इसो लगा इच्छा के पूरा करिबो करने ताई तो रास्ता Another जैसी thing about servant in the Bible, Jesus said, a servant is one who is last. mo pohanu kitomi idi poba mo ka thala sanu ngo ke lege me kitomi sabo thela jati ka bao so sa poba ताई के नौकर इने का कोई यहाँ से बाइबल ते नौकर खान ऊपर की लिखे यहाँ से ताई कन तो होता है पीछे ते ठाके So when God takes us through such paths, remember, God will be with you if you also submit yourself to take upon you that form of a slave. no sala rkaleje no ropa kalu jati no mhasi se ke ja chau nu vo ka ja chdo mo no so se ke ja tiu no ntion chakar no di no mi de me kitomi ri nu chele le ro o ko bnya ban khris dio अपने खान भी तो निश्चल लगा आत्मा फिनी रास्ता खान बेची ती जबो पर रे तो करने जुदे अपने तो रास्ता ती जाइसे गोले अपने निजो के पूरा पर तो नीचे ती दे के अपने निजो के नम्रता करी लो भी सर अपने साथ ते ठाकीबो Next point, Acts chapter 7, verse 8. He delivered him out of all his afflictions. se chaka kro le ro ma ka chko theni the thau no po ke me je ka chpe te no po ke la sa इधर पीछे लगा point to Acts chapter 7 verse 8 ते सॉर्ट टाई के टाई लगा दिगदारी खान सब प्रचुत करा दी से For that you need to now, for the next few moments, we're going to turn to Psalm 105 and going back to Acts chapter 7, Psalm 105. ko cheli ro cheli ko kre budi pengu no mo hosodo mo se no la ma ka chko theni no la bodo इतो करने हमें खान Psalms 105 ते सबो इधर पीछे ते Acts chapter 7 ते आको जाबो Here, Psalm 105, verse 7, it says he sent, verse 17, 105, verse 17, he sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant, verse 18, whose feet they hurt with fetters, he was laid in iron, verse 19, until the time that his word came, the word of the Lord tried him. mo ko cheli ko kre budi pengu bodi ke thenie ke thata ke thapanu mo hosoro ko chunu le gibi u ko mhoja po mi po ke chesa u ko mhoja po mi po ke chesa Joseph chu kitio ke chela po zewa sidi u ko ke ro ko pie po phi ke theginu pie po pha ikatsa po dio work mo chie nyepo po dio po die po ke shim ho verse 17 ते पुरिया से जोसेफ इतो मानु के जुन तो के नौकर होय के न बिक्री करी दिसे इतो मानु के ताई कन आगे ते पठाई दिसे verse 17 18 ते कोया से ताई लगा थैंक तो ताई का नि तो बंदी के नहीं जोकम करी दिसे ताई के इतो लोहा ऊपर दे थाकिबो दिसे verse 19 ते अमेरिकन पुरी बोले परिया से इसो लगा कोठा तो ताई लगताई लोगो ते आहा तक तो इतो समय न पंचा तक तो इसर कोठा रही ताई के परीक्षा करिसे What were his afflictions? He was sold as a slave into Potiphar's house, falsely accused by Potiphar's wife, then wrongly judged, cast into the prison dungeon and kept there for some time. Moses po je pie ke die chwa sa sidi Potiphar kino po je ke die chwa die mi chaka cha mo Potiphar kimie sidi po pe jok cha po pe jok wa chwa sidi po ke die kino ke die sosori cha ताजामी खान के पूरी बोले पड़े ऐसे कुले थाई कि बिक्री करी दिसे फेरो लगा पटिफार लगा घर ते ताई की बिकाई दिसे तटिप्रा ताई के गलती पर दोष लगाई कि न ताई के इटू नीचे गदा खुंडी के न ठका ताई के एकला राखी दिसे But the word of the Lord tried him. Till that time, he kept the word which God spoke to him long beforehand. दरी के मजा बा ओ के मतलब दियो पर चक दियो है पसोस पनु की बस सिगच सोसचा और अलग देरी करने ताई के ताते है इनका राखी था कि किंतु ये जो लगा हो मोय सब ते तो आगे दी सो ताई के कोठा कोई के न ठाकिया लगा तो ही ताई धुरी था कि And the Old Testament is quite different than the New Testament. At that time, the word of the Lord is also spoken through dreams. That's how God spoke to Joseph.
mo katol sa ka ti unilero bori krizadi o ka benda mira chaka cha mo mi mo ko no ri mira chaka cha chia mo Joseph zo sheri o ka benda pa phone no pura chaka cha ওটো সময়তে ঈশ্বৰ এতিয়া আমি খান কি কথা কৰি থাকিয়া লগা হিচাপ নৈ কেনে দুসৰা ৰাস্তা পৰা কথা কৰি থাকিছে ঈশ্বৰ মানুহ খান কি সপনা পৰা কথা কৰি থকা নিচিনা জোসেফ কি বি সপনা পৰা কথা কৰিছে You may say God did speak to you in the dream and something took place in reality. Yes, God does speak in dreams. We don't go by dreams. We need a word of God to confirm that dream. uko uzo uko re mo ko no uko benda pa ura chaka cha so ko chaba deri uko hon ura chaka cha so sa patu zo ka choko benda ma do tu zo ka cha sile ko uko benda pa dio no so sa uko ra chla ka cha uko bo so ngut ka cha so chele mo jo আমি খান কৈ থাকি মই এইটো সপনাটি পাই থাকিছিলে এইটো পুৰা হৈছে হসা আছে ঈশ্বৰ তাই সপনা বাবে আমি খান কি কথা কৰে কিন্তু সপনা কৈ ডাইৰেক্টলি নই কিনা আমি খান কি ঈশ্বৰ তাই কথা বি দি কেনে বি কিটুকে তাকৰা বনাব লাগে So Joseph kept those dreams, the word of God, which God spoke to him through those dreams, and went through all these afflictions. So what is it compared to in our lives? Masala Joseph we uko benda pa phone no pura chaka cha dia choko punuki se tyo ka cha so cha mo so ha sabodi tie uko kelho je kicho bonu ke majali bidoga जोसेफ ले भी सो सपना पर ताई के कोठा कुरी दिया कान सब ताई लगा मन बिटोटे राखी लुगी रही ताई के दुख दिया लगा रास्ता कान सब ताई बुखी था किसी ये तो हमें कान लगा जीवन तिकी के दिखाया से Center pastor, is it okay? I just finished the important points. Is it all right? It won't be too late. Okay, all right. So I'll take the permission from the center pastor to go a little more. ache uko center pastor Not too much more, just a few minutes more. so sa pilidi uko puti se pa chazol ho der am hacha kro sa pusedo ako olop humoi lobo karni moi sante pastor के परमिशन मांगे लइसे Okay, keep the word in your heart. Psalms 12 verse 6. uko cheli ko ker ke nye sor nu thube ka ba ke mi uko benda dio bi nye melu nu khaba lije Psalm 12 verse 60 को यहाँ से ईश्वर को था अपने का लगा मन ते राखी भी The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. nyepu dio ko ha me sam pu zo runyo mi pu no rakatsa the me hok wa tu va thenye so sa chike ma sawa te ईश्वर लगा कोठा खान तो सफा था लगा कोठा खाना से एक ता चंदी की किने का माटी बिटोटे जुइते इटु के सफा सतबार कुरी दी के ना सफा करे इटु निशना से This dear pastor has been to him how most of the doctrines are revealed. And so, here an outstanding life by God's grace. So, and life in ministry. So he said to the servants of God, when you hear a preaching, you don't think that this person is preaching in this language or that pastor by that name is preaching. You must take that word as though it is coming directly from the mouth of God. Salago pastor Shekata pastor Ernest we le thoko ki pudi nyoko lo hao die ka patha die ran ka chiki die sunu no vorba so ki no vorba ka cho le da hederi so u ka bna pa me tie ginu no message to di ni ki vorba ka cho so sa ni le me nyokle so sa chile je di puya Pastor SB Ernest प्रामी खान लोगों टे बहाल सिखाई जाओ कोठा खान बेचे फाई लुइसी और सब रबी टाइ लगा जीवन और टाइ लगा सेवा टे एकदम बहाल खास था किसी टाइ जो सेवा मनो खान के इनका कोई था कि कुन पा मनो पर प्रचार करा हो मोइटे इटो मनो टे इटो भाषा टे प्रचार करी से उटो कोई से इनका नौकबो लगे किंतु इटो कोठा टे सो टाइ नि जोर लगा मुख पर अपने की ध्यान इश्नाई लोबो लगे When college professors, university professors and all talk, everybody is writing, everybody is noting. How carefully? What college ko no ka patha mi ko professor ko patharo te mi ko menyo sidim ha ko thubaya कॉलेज टे यूनिवर्सिटी टे लेक्चरर्स कान प्रोफेसर्स कान कथा को लेके मान भी मनो कान मन दिखने लिखी থাকে These words are, you won't get it again. Any pastor, any worker who is preaching, take it as coming from the mouth of God. After that message, you won't get the same message again ever after. chela ka patha me ko bo jose patha ka jagi nyogo ha ko thume nyole je ke klom na nyogo dieso ko labo ke krimi ki no ngula ke le so sa chele muda এটো libi গানে পাস্টার্স কান জুন টুপরা হলে বি সর কথা দি থাকে সময়তে আপনি কান লিখি লব লাগি কিলো মানে এটো একই কথাটা আকো আপনি দুসরা বার না পাবো What God speaks to you through the word of God also, that Bible is also from the mouth of God. sa u ka bno ki zo nyera chaba si sori u ka bno pa dio gi no u ka bno pa me ti gi no pu par ka ba dio zo इसो टाइ लगा मुख पर अपने के की कोठा करिया से इटो बि इसो लगा कोठा पर रहिया से Why I am saying this, you must note it down. God is telling you, forewarning you,
You don't know what trial is going to come, but through this message today which you are listening, you are going to face some trials in the future. If you take this word to heart and keep these words in your heart, you can claim it in the midst of the trial, like as it is said in Psalm 12 verse 6. And you will come out successfully. Akidi ho pubaga liro uke bunyabe dia ho anyo ki vorba munyo ko hako thule morsho ke kilomna thule di nyogo hako pradinya meluki seseti ho liro ke dodza kere tivo so vorje munyam hozuno vordo mun ne satiu no nyogo hako ha praranja ka chaginu no nyogo suno ke dodzu suno gogele chele do আমি কি কাৰণে আপনি খান কি কৈ দিয়া লগা কথা কান সবটো লিখি থাকিবি কৈ আছে কিলো মানে আপনি লগতে কি পৰীক্ষা আহিবলৈ আছে আপনি তো না জানে এটো কাৰণে আহিবলৈ লগা দিনটি কি দুখ দিগদা পৰীক্ষা আহিলিবি আপনি এটো কথাটো লিখি লৈ কেনে থাকিলে আপনি লগা মনতে ৰাখি কেনে থাকিলে ওটো পৰীক্ষা লগা সময়তে আপনি এটো কথা কানটো লৈ কেনে এসো লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিব তেতিয়া Psalm 12 verse 6 লেকে কেনে থাকে হিচাপতে জুই লগা পৰীক্ষাটি যা পছতে হলিবে আপনি তো জিতি পাই কেনে বাহিৰ ওলাব Your life, you are that, your body is that furnace of earth. Keep that word in your heart like silver. The fire of the anointing of the Holy Spirit. When you go through afflictions, fiery afflictions, the fire of the anointing of the Holy Spirit will sanctify you, purify you, purify you. It's a work purified 7 times. A perfect work He will do in you. uke bunyabe dio bi nyeme luki sele liro suwe uke bunyabe dio thyo nyetsake ma samuke ma sagaza uke bunyabe repo leri nyetsake ma sagaza uke bunyabe dinu thubi ka bakami wa thenye sake ma salya ka jaga me so chale dio इसो लगा कोठा तो अपने लगा मन बितोते राखिले भी अपने लगा मन तो होले इसो लगा जुई थका लगा जगह से तो करने किट्या परीक्षा लगा जुई तो अपने विरोधी आयु बोटिटे अपने बितोर इसो लगा जुई थके अब एटो के जुलाबो एटो के सफा करिबो 7 बार सफा करि दिकिन अपने के पूरा परिपूर्ण छाई दिबो So you can't write it down, you will miss the message. If while I'm writing, I'll forget, I'll not be able to follow what I'm hearing. Get the notes from someone else later. But after the message, go through the word of God in your personal prayer, claim that word of God. And in due time, when you go through trials, the Holy Spirit will be able to easily remind you of those scriptures. nyongo sala ko thu menyule mo nye sabo mo liro kenyomi kinure so ko thule sidi nye kiti kinu bodi nye thyo nye ka chatti unu hago me dosle mo phaka dojkere work jati ki kama sar pu thyo ho ha sepori nye bor kala ka chale do monno su ginu no ropo ansepe kobe muso ko nu ko kele so se chale do एटो गटा खान सब ते लिखि लेबी अकुन बा ना लिखि केना थाकिया खान बे पिछे दे मानु के किताब मांगे ना ताते लिखि लबो लागिबो किते आमे का नेटो लिखि राखिबो तिते आमे का निजो बहि केना प्रार्थना कराउ हमयते एटो गटा एकटा कहि केना आमे का निसो लगते मांगी थाकिबो पारिबो तिते किते आमे का दुख दिगदा परीक्षा लगा हमय जाबो इसो ठीक हमयते ठीक कोठा तो आमे खान के याद कराइ दिबो His own nature was refined. Then what happened next? Acts 7 verse 10, God gave him favor uko ssie in the sight of Pharaoh, king of Egypt. ko kelu so se ka masakele chele mo ssie no magacha ko thenye keron ko ngo kizo phelebaga poe ferom hojunu no poni pele siba ताई इतो निष्णा खान पर ही ताई लगा नियम स्वभाव की बदली करी बोले पारिसी सफा करी बोले पारिसी तो पीछे एक्स चैप्टर 7 वर्स 10 ते अमेरिकन पुरियांसी इजिप्ट लगा राजा फेरो लगा सुको आगे ती ताई दया पाई लुइसी What is that compared to in our lives? musu uko kelu no dio je ke me jelibi doga इरामी खान लगा जीवन लोगो ते की सत्य नाप करियांसी Psalm 89 and verse 17 says, For thou art the glory of their strength, in thy favor our horn shall be exalted. Psalm 89 and verse 17. musla uko so sebodi cheli ko hetha tha thapa ke thenyu nu thubi ka ba ka me no so uko ke ko ke view ju no uko here ya pia ka za kiu peshile dio idipuba इतो ही अमेरिकन साम 89 वर्स 17 ते परिबो परियासी किलो माने अपनी ही टाइकन ताकत लगा महिमा से और अपनी टाइकन के दया दिखाई जाते अमेरिका लगा सिंह के ऊंचा उठाई दे Horn can speak of God's strength, God's power. ke ka za ho ha uko bin ba ke ko po mo ko ke ni so po ba सिंह तो होले सो लगा हक्ति और ताकत के दिखासी God is the source, He is the glory of our strength. He is the source of that strength and power. uko bin ba thyo uko ke meti puginu ke vor so sa chaba इस अर्थ जो महिमा लगा ताकत तो थाकिया से जो करने चाहिए अमेरिका लगा हक्ति और ताकत लगा आहिया जगह से When you go through afflictions, it's the devil who is doing it to you, not the people. So, what do you need? You need God's strength and power
to see that those powers are destroyed. no sla phakare ke do jun wok jati so themi ginu forba mo de ke so ro po to so sa chaba sla no so tiu no ke ko committee so sangule ke dula no u ka bin ba dia ha ko semor so ba किते आपने दो करे परीक्षा लगा रास्ता ती जब इटो दो सतन पर आहा लगा से मानो पर दिया लगा न होय इटो पर अपने चुटकारा पाई लोबो करने नाश करी दिबो करने सो लगा ताकत और हक्ति लगे So when you receive that horn, Psalm 92 verse 10, Psalm 92 verse 10, 11, but my horn shall thou exalt like the horn of a unicorn, I shall be anointed with fresh oil. 실레다 제노 첼리고 헤타파 게니 케르노 투베가 바게미 데리노 아키요 츠케르 크리베 나위 fak게 두이스데 모 Dear Kasabia aken hesate idipuba. इन्हें कहले Psalm 92 verse 10 ते लिखी गिना था क्या हिसाब से आमी खन कबो आमी लगा सिंह के अपनी यूनिकॉर्न लगा सिंह निशना ऊंचा कराई डीसी अपने आमी के ताजा तेल पर अभिषेक करी डीसी That's how the Old Testament anointing was given through oil. The anointing of the oil in the New Testament is through the anointing of the Holy Spirit by speaking in tongues. Katholasa gaveti unuliro dear bie so second hekaza chasa deri katholasa ka sati unuliro kemasar pugin no ko ken hekele sedi ko po theni pule kele so chale ba पुराना नियम लगा हो मई तेल लुई के ना अभिषेक करी दिया तो करी दी था किसी किंतु नतुन नियम ते आमी खान के अन्य भाषा को लगा चिन लुई के ना पवित्र आत्मा अभिषेक करी दी When you pray against those spirits that are afflicting you, be it a physical, whether it be a spiritual trial, a mental oppression, or a physical affliction, ये तो करने की चाह spiritual trial, mental oppression, or physical affliction, salon kalhono rapu kalho jati libi samonu libi ha patsa panna kacha shizo vor kacha ki ये तो करने की चाह अपने भी आत्मा फनी लगा परीक्षा हवा परे गाँव मांगसे जा अपने के दुख दिया मन भावना जा अपने के दबाई दिया लगा रास्ता जाइले भी like Pastor gave a verse yesterday, He will lift up the burdens of your shoulder. By the anointing, the yoke shall be destroyed from off your neck. la ugo pastor pu kacha ke me vogi vo chiego piego suko puken hekele ko ginano suko pete ko bitse bit chawadio idi puba जो काली पास्टर ब्राह्मी खान के कोई जल निशिना ये तो अपने लगा कंधा ऊपर दे ठाकिया लगा भारी बोझ तो हटाई दिबो और ईश्वर लगा पवित्र आत्मा लगा अभिषेक पर अपने लगा गला ऊपर दे ठाकिया लगा जुआ के नाश करी दिबो You pray against the spirit, take any word of God, take the name of Jesus, whichever God puts in your heart, then He will anoint you with fresh oil. Mushidi no ka masar pu be chule die ko pure uga bna dio so se non pradi ropungu ke le chele mushile le ro su chegele ginno no ken hekele ke ko ka sa dear ka sa so nguli do ये तो करने अपने इटा आत्मा खान विरोध थे धमकी दिया गले दिया लगा हो मोइट अपनी इसो लगा कोठा तो लोबो लगी इसो लगा नाम तो लोबो लगी जिते इसो तो अपने के ताजा तेल पर अभिषेक करिबो The strength of unicorn speaks of a strength, so great strength. Nothing can stand before that strength. ha wi pa pu ke ko se ga ni thro ga so chaba mo ha pure so pu pe thagele so chalenja यूनिकॉर्न लगा ताकत कट एकदम डांगर ठाका लगा ताकत ऐसे जुन तो ताकत पर भी इटा आगे खड़ा करिबो न परिबो That is the strength you will get, the horn, strength and power through the anointing. No devil's power will stand before you. It will be utterly destroyed. no ke so ginno en hekele ke kongu ke le ke me so ke masar pu ke kongu le do mo ke ko pure so sa pe chu di shekele thaga so chale losla ke shor pu pe te guri pe chu ka pe te guri no pe ka pe ro ka wa so chawali do ये तो हले इटो सिंह के कोई आसे जुन तो ताकत और हक्ति आसे अपने लोग इटो थाई के लइले कुन तो आत्मा भी अपने विरोधी खड़ा करिबो ना पारिबो किंतु इटो आत्मा और हक्ति पर अपने इटो का सबके नाश करिबो Don't expect to speak a few tongues. No. Believe and speak till you receive that fullness. so vapurobi puri peledi puka cha mode pusizo pale shiri no chu ke chukel ho kan hekele ko susa muchigile so chale morjo अन्य भाषा लोग कोई की नहीं जो निश्ना काम चलिबो करने अपनी आँखा न करिबो लगे किंतु अपने इटो कोठा कान के विश्वास करिबी अन्य भाषा को भी इनका गुना अपने पूरा पूरी पोंछलो अटक को लगे Verse 11, then your eye will see, Psalm 92 verse 11, your eye will see your desire on your enemies, your ears will hear your desire about the wicked that rise against you. kerpono he thapa ke ne kerpono amhiri angumamegi mukenno ngudio anyiri agi hake shotsu dio ke shirgo gi sako
siga chako pette sile da dio Ini kaule Psalm 92 verse 11 to kuya si moi nijo laga sukup rahe ami dushman upor ti moi ke ichha kuri taki she to kuri diao to dikhi pabo ami nijo laga kan pra dushto manogan moi viroti khara kora kan logoti ki hobole di se to hunibo paribo Finally, this is the end of the message. thalano kapatha thalano Akrite Acts chapter 7 verse 10, Pharaoh made him governor over Egypt and all his house. she thalano pharaoh so sa ho bubu body ka ko seka so sa chada Egypt upoti aru tai laga pura goru upoti Pharaoh to Joseph ke hi raj chalawale He di was se next to Pharaoh. bubu pharaoh khotto so sa chada tai to Pharaoh nichi re thaki jaisi Likewise, when you overcome all your trials one by one, one by one, one by one, overcome the world, the flesh, and Satan, noisala kijuno ha ke to joko kere ko poshi pupudi ko pole kijuno cha pumengu ko ke som pete ko mo ko ke le chele liro Ido eki nishna kita amikhan laga jivan ta halaga parikya kan ekta upoti ekta jit pai gena jai thakibo kita amikhan laga gau mangsa ra satan upori jit pai lobo first of all, you must be purified 7 times, entirely sanctified in spirit, soul, and body. Chidisha nsaka masa mimi ke le chidi bathe nye chaka masa ka so cha nsmor pukero pate chaka masa chigele tashe सबसे पहिला amikhan निजु के सफा करी थाकी गेना 7 बार सफा करी लोइ के amikhan laga badan pran atma ti pura pari safa hoi jato pai lobo lage That's not enough. You need to become a ruler. You need to overcome this through the strength and power of God through that anointing. there should be more no sum ho u ka bin ka masa pu gi no so ko pate ko bodi no ke khag cha thaunu vole morsho Itu ikla jo kafi nai kintu amikhan te so laga abhishek pai loi gena tai laga takot tai laga hokti bra itu kan sab body jit pai lobo lage Like Joseph was next to Pharaoh. You will be with Jesus. Revelation chapter 3 verse 21. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father on his throne. u ko sala Joseph everybody pharaoh krot to make khag cha thaunu vok le me u ko ri Jesus Christ je body u ko pesika se me pe bo senu pu ka ba ke be ko ke le me ko vo akidi bauno aze so sa didio idi pu ka ba thaunu vok le chele morsho Joseph the thick Pharaoh niche ti thaki lo nishina Revelation chapter 3 verse 21 till isor to koyansi jun manu jiti pai lo bo titia ami kine ka baba laga daina hati boyansi kine ka jiti pai lo isi to eke nishina ami tai ki be moi laga singhasan ti boi bole At dibo the end of the message, to fulfill that message in your life, God will send an anointing. It just takes 2 minutes to receive that anointing. Shall we stand? u ka bin pu dia khag cha ki so ko cha ze le dola pok pok ma sa pu ri ke cha se ya musala ko ka ma sa pu sung le dola minute ke nye bor bi so sa ti se ka cha cha de mo nyu ko pete ko she thapre le dokha Itu sandesh kota mo opportunity to kotha to apne laga जीवन te काम करिबो कनी so da abhishek Hallelujah. pathai dibo itu abhishek to काम करिबो le khali 2 minute Close ki your lagi to kani eyes. sab Close your khara eyes. karibo Please close your eyes. pete nye pe je mi pre le je moram rasa ko bon karibo Are you going through some afflictions? no hakker re ke do ho nu voje me apne ke बाद दुख रास्ता जहाँ से Are you being misunderstood and falsely accused? no me nchi ka krele di ha no putu ka manu nu pe jog cha chaba me मानो अपनी के गलती पर बुझे पाएगी ना अपनी के गलती पर दोष लगाया से Are others treating you badly and taking advantage of you? men ma ke so pudi ngi ma ke so cha cha chaba me मानो कन तो अपनी के एकदम बिया पर चलाएगी ना अपनी के फायदा उठा से Oh, whatever injustice, whatever affliction, or even in your body that you're going through now. mo unke lhonu morin mono so mono ha kere ki chin ha no che bo ba zo shiri मानो अपनी के ठीक रास्ता पर ना चला नो हेले भी अपनी लगा गाँव बदन के बाद दुख ठाकिले Your Lord knows about it. unke penjbe su shiva अपने लगा ईश्वर तो जाने But let him be with you. Humble yourself. unke se kar nyole bubun ze bali je किंतु ताई के अपने साथी ठाकी बो दिबे अपने Submit निजो के yourself to नम्रता him right करिबी now. Submit to his word. no che unke kabe pu tsele unke kabe pu dio no sele इधर इधर अपने निजो के ताई नीचे दिया रोता लगा कोठा नीचे दी दिबी Lord, you have your way in me. Purify me, sanctify me, Lord. ye pu non thon chau apun chau no bali je no chakama sasli je ndio bia chakama sas je ईश्वर अपने लगा जीवन जे अपने लगा रास्ता ही हो बोले दिबे अपने मोई के सफा करिबी If you have got angry, upset, and anything wrong reactions, ask pardon. He'll forgive you immediately. no ma ho no ni mo no me ye ga za se ga za sabari no so la unke jo cham ha ole pun chaka la se dio किबा करने अपने बिया पाएगे ना गुस्सा उठेगा ना अपने Hallelujah. स्वभाव ठीक ना चाहिए माफ मांगी बेटा अपने के लगे लगे माफ दिबो Next, you claim the anointing. He's going to destroy those evil spirits that rise up against you.
是些那个嘛事不查嘞不你个不个吧马苏个不这个不本身话的 मेरे बेटे जब अपने चाहिए अभिषेक मांगे अपने के दिगदार दिए ताकि लगा आत्मा का सब चाहिए नाश करी we are बो only left with one more minute. 그거 미닛 보조 돼 इटे एक मिनट ही बाकी है Believe, start believing and speaking in tongues. 벨레레 시디 팬이 뿌레 ईश्वर के विश्वास करेगी ना नहीं पशु को भी Amen. Hallelujah. Don't keep quiet. Servants of God, don't keep quiet. Children of God, don't keep quiet. 그게 뭐냐면 내 토미고리 태미고리 지바다 해 ईश्वर लगा सेवक है और ईश्वर लगा बच्चे का चुप ना थकी भी This strength will take you forward. You are going to overcome your trials. केको होथियो 스펙 고벤 부 이게 돈도 고길에 매철레도 ये जो ताकत प्राप्ति के आगे लोग जब अपने लगा परिचय बोले Hallelujah. चिट्ठी बोले की वो Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. For the word of God he has given us, for that strength and power, that whereby he has destroyed so many spirits that are working against us even now, shall we praise God. Ugo beneva dabi kabi ugo katsa jo ugo beneva kakko bo kakko kasudi ugo petsudi matsa ba rupa kasoko peteko benze katsa susa wa jeti unuzi susa kasala ugo beneva cheroke ईश्वर चाहे लगा को ठामे खान के दी दिया चाहे लगा हक चारो टाका ठामे खान के दी के नामे खान विरोधी काम करी चाहिए लगा आत्मा खान सबके नाश करी दिया खान ईश्वर के धन्यवाद दिबो Now, pastor has requested me to pray for the building work that has been completed and also some yet to be completed. ugo For pastor all the congregation to pray together. ba ugo anu center pastor liro abu mugo metsepete ugo ki ho ha sekele kolari mu tsabo ke kolari ka chachse no ka japu ka jala ko ka chachse do इटेटा गामी खान लगा घर के मन बनाई लोगी ना से इटु करने आरो बना बोले बाकी ठगिया कान सब करने पास्टर तो सब मनु की प्रार्थना करी दिबिनी को As we अनुरोध करिया से pray, the presence of God is going to fill all these places. sala ko ka chachse ke jigi ugo beneva tio ka cha thacho pete ko chubo ka chachse do हमें खान पर प्रार्थना करो हम जैसे लगा समक जे इटु जगह पूरा के बढ़ाई No जो बोले evil से can take place in that places, and the devil's power that tries to work against us will be broken to pieces. ha puri pechu ka je mukeshwar pu ma to ko o pechu di ma cha ka ba so ko pete ko per he pen no adi bia che bia chachi ka ba so cha wa do एको बिया हक जे सता लगा हक जे हमें खान ऊपर ती विरोध के काम करे बना पारिबो काम करे ठगिया लगा हक जे कान सब टुकड़ा टुकड़ा जे सब भाई Psalm दिबो 118:15 says, "The voice of rejoicing is in the voice of rejoicing and salvation is in the tabernacle of the righteous." ugo sala cheli nungo ke lege me ke me thome ko ju pekyu no we ugo beneva zapu jaye suba si di puba सामसा का किताब जे हमें खान पूरी वो पढ़े से धार्मिक मनो का लगा तंबू घोरते इटु खुशी पा लगा स्तुति लगा आवाज तो ठाके Right hand of the Lord does valiantly. The right hand speaks of the power of God. muke beneva je za cha so sa senuba ka cha so sa le ro ke beneva ke me tho so sa puba ईश्वर लगा दाहिना हाथ पर हकते लगा काम करे छी तो हकते लगा दाहिना Right हाथ तो हकते now, the Lord ऐसे may bless all these places which have been built and undertake the use of it, destroying every devil's power that may try to work in these places too. And the rest of the work to be completed, God may undertake. Shall we all pray and get filled in the Spirit? ugo sala ma tho chi ke le golari church sa bo ke do golari mo ma tho ho pechu ka cha ma tho cha ka ba ro pu ke so ma tho ko se chaka ko pete ko se ugo beneva per he pen na pe ka per ro chi wa ke do la ugo pete o ke se ro ke se ka cha chi ro pu no ugo chu ke le chale इटे जगह तो जगह जी काम चली लो और के मन काम बाकी ठाके ऐसे इटु कान सब इसे चलाई दिबो लगे की बिया हकते जो विरोध ना उठे बोले मिले के ना प्रार्थना Pray, करिबो pray and get filled in the Spirit. si ro pu no ni chu ke le आत्मा chale जी je बोटा करिबो praise the Lord 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 Amen. Once again, giving God all the glory, honor, and praise, shall we praise God. babu sa the che thor zabu za pete ka bio ko beneva cheri ko beneva chero ke और एक बार सब मन महिमा स्तुति ईश्वर की देगी ना धन्यवाद दिबो Hallelujah. praise the Lord 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 praise Righteous Heavenly Father, we give thanks unto Thee, O God. This last day of the convention came in our midst
with thy glory, O God. Thank you for giving the counsel, Lord, how the Abraham, Lord, saw thy glory and followed thee, O God. And you only blessed him, O God, abundantly. And through the Abraham, Lord, so many people blessed in the world, O God. Like that, through Lord Jesus Christ, all the blessings of the Abraham you gave to us, O God. This morning you revealed the glory which Joseph also, Lord, blessed by thee, and he was a governor of the Lord Egypt. He overcome the Egypt. Lord, when we receive the glory, Lord, the power of the Holy Spirit, Lord, unicorn strength you are going to give to us every time, oh God. Lord, all these verses, Lord, thank you for strengthening us, O God. Lord, keep in our mind, meditate these verses. Lord, you are coming very soon, O God. We may purify ourselves and sanctify ourselves and come to the perfection for thy soon coming, O God. We asking all in sweet, loving Jesus' name. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until Jesus appears in all his glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all.